Are you struggling to score in class 10 maths? This video could be the solution. Save it and start with 100 essential questions. Question number 99. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Interesting. Let's start. So if you look at the diagram, BC क्या है हमारा? BC is the building and AB is the tower. तो BC बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमने टावर बिठाया हुआ है, दैट इज AB. बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर्स. एंड D पॉइंट से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग कितना है? दैट इज 45 डिग्री. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा उससे, राइट, बिकॉज इट इज ऑन द बिल्डिंग, दैट इज 60 डिग्री. ट्राई टू विजुअलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू कंसिडर द ट्राइंगल BCD, ध्यान से देखो, BCD ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इफ यू टेक tan D, tan क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज वी नो द ऑपोजिट साइड and we want to calculate the adjacent side. So tan D is equal to BC upon CD. D is 45. So tan 45 is equal to 20 upon CD. Tan 45 is 1. So CD is equal to 20 meters. Now consider the bigger triangle ACD and again apply the tan D. So tan D is equal to AC upon CD. Now the angle D is 60 degree because it is angle ADC. Previously it was BDC angle, right? So tan 60 degree is equal to AC upon 20. Tan 60 degree is √3. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3 मीटर्स. अब देखो AC की वैल्यू वी नो, BC की वैल्यू वी नो, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द AB डिस्टेंस. सो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC. सो दैट इज 20√3 माइनस 20. यू कैन टेक 20 कॉमन, सो दैट्स 20 into bracket √3 minus 1. दैट्स द हाइट ऑफ द टावर. दैट्स इट.